स्टार्ट करते हैं आज जो सेकेंड ईयर संडे इवनिंग एमडी के टेस्ट हुआ जिसमें सेकेंड ईयर के चैप्टर दिए हैं उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुला ऑफ द कार्डिया। तो याद रखिए, कहते हैं कि नेफ्रॉन जो है इसकी दो पार्ट है। एक जो है इसका रीनल कार्पसल है और दूसरा जो है इसका रीनल ट्यूब्यूल है। सो अब हमारे पास जो रीनल कार्पसल होता है इसकी फिर फर्दर हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक जो है वो है बॉमेन कैप्सूल और एक जो है वो है ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलाई। सो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये बॉमेन कैप्सूल है और यहां पे एक आर्टरी एंटर्ड होती है, इसको एफेरेंट आर्टरी कहते हैं और यहां से वो लीव करती है और इसको हम ईफेरेंट आर्टरी कहते हैं। एक है एफेरेंट आर्टरी और एक है ईफेरेंट आर्टरी। तो अगर देखा जाए ईफेरेंट आर्टरी और एफेरेंट आर्टरी के जो डायमीटर है उसमें फर्क है। ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये है एफेरेंट आर्टरी और ये है ईफेरेंट आर्टरी। जो हमारे पास ट्यूब्यूल वाला हिस्सा होता है इसमें तीन पार्ट है। एक है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक है लूप ऑफ हेनले और एक है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एक है कलेक्टिंग डक्ट। तो याद रखिए, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसके बारे में कंसिडर किया जाता है कि ये इम्परमिएबल है, ये हमारे पास परमिएबल है टू वाटर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जबकि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये जो कि थिक होता है और ये हमारे पास इम्परमिएबल होता है टू वाटर। अच्छा, अब यहां से होता क्या है कि यहां से ये जो सराउंडिंग एरिया है इसको इंटरस्टिशियम्स कहते हैं। इस इंटरस्टिशियम्स के अंदर ऑस्मोलैरिटी साल्ट वगैरह जो है वो ज्यादा होते हैं, इसके अंदर सल्यूट वगैरह ज्यादा होते हैं। सल्यूट के बेसिस पे वाटर जो है वो यहां से निकलता है। सो ये वाला पार्ट जो है ये परमिएबल टू द वाटर होता है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो हमारे पास इम्परमिएबल। अलबत्ता यहां से सल्यूट या साल्ट वगैरह को एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से निकाल दिया जाता है और वो इसके साथ ऐड होता है, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो है और भी बढ़ती है, जिसकी वजह से मोर इन मोर साल्ट वाटर जो है वो बाहर निकलेगा। तो इस वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, जो कि यहाँ पे ऑस्मोटिक वाटर जो है इसके एब्जॉर्प्शन में रोल अदा कर रहा है। सेकेंडली, a patient has the damage to the thick ascending limb of loop of Henle, which of the following will be directly impaired? ये पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो जाहिर बात है यहां से जो साल्ट्स वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड नहीं होगी। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की री एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। थर्ड एमसीक्यू पे आते हैं, इफ अ पर्सन हैज अ हाई लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। अगर एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसका लेवल ज्यादा है, इफ अ पर्सन हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट आप वे में याद रखें, ये और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये एडीएच के कंट्रोल में है, यहां वाटर की री एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंक्रीज परमिबिलिटी टू वाटर बट नॉट यूरिया, इसका यूरिया का ताल्लुक नहीं है, वाटर की री एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यू दिया है, व्हिच सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन इज
impermeable to the water even in the presence of ADH. आपको पता है कि ascending loop of Henle जो है it's impermeable to the water है. So option C is correct. Fifth, which of the following statement about the vasa recta is correct? यहाँ पे ब्लड वेसल होती है, इसको वासा रेक्टा कहा जाता है. ये वासा रेक्टा ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जो है उसमें इन्वॉल्व होता है. काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. दे एक्ट एज ए काउंटर करंट एक्सचेंज टू प्रिजर्व द मेडुलरी ग्रेडियंट. 6. The functional unit of the kidney is nephron. So option B is correct. 7. Which part of the kidney contain the glomerulus and Bowman capsule? ये renal cortex में होता है. So option C is correct. 18. Which of the following is not normally found in the urine? Urine में glucose नहीं होता. So option B is correct. 9. Reabsorption of the glucose occur mainly in the proximal convoluted tubule. यहाँ पे glucose की reabsorption option A is correct. 10. The hormone that increase water reabsorptions in the kidney is antidiuretic hormone है ADH. Option C is correct. 11. Which blood vessels carry blood into the glomerulus? Afferent artery जो है वो लेके जाता है. So option B is correct. 12. The loop of Henle is mainly responsible for concentration of urine. के लिए responsible है कि dilute होगा या concentrate होगा. ये loop of Henle. So option C is correct. 13. Which of the following is a waste product excreted by the kidney? Urea excrete कर रहा है waste के तौर पे. Option C is correct. 14. The part of the nephron that open into the collecting duct is distal convoluted tubule जो है वो collecting duct में open होता है. So option C is correct. 15. The major site of sodium reabsorption under the influence of aldosterone. So distal convoluted tubule और collecting duct दोनों aldosterons के कंट्रोल में है सोडियम को reabsorb करने के लिए. 16. The outer region of the kidney is called renal cortex कहते हैं इसको. Option C is correct. 17. The cone-shaped structure in the renal medulla are called renal pyramids कहते हैं. Option B is correct. 18. The glomerulus is the network of capillaries. So option C is correct. 19. Which of the following is the most common type of kidney stone? Calcium oxalate के जो स्टोन है वो 70% होते हैं. So option B is correct. 20. A patient with a recurrent calcium oxalate stone should be advised to avoid high oxalate foods just like spinach वगैरह. So option C is correct. 21. Steroid stones are primarily caused by chronic urinary tract infection with the urease producing bacteria protease. So ये इनकी वजह से जो है मसला होता है. So option B is correct. 22. What is the correct order of urine formation? Filtration, reabsorption, secretion. So option A is correct. Next आते हैं figure number 23 पे. In which part of the nephron does glomerulus filtration occur? Bowman capsules में होती है. तो option C is correct. 24. Which of the following is not normally found in the glomerulus filtrate? Red blood cell इसमें नहीं होते. Option D is correct. 25. The primary force responsible for glomerulus filtration इसको hydrostatic pressure of the blood कहते हैं. यहाँ पे जो प्रेशर होता है ये ब्लड प्रेशर नहीं, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ये ब्लड का होता है. So option C is correct. 26. Reabsorption of glucose occur mainly in the proximal convoluted tubule होता है. So option A is correct. 27. Which hormone increase water reabsorption and the collecting duct? Antidiuretic hormone का काम है. So option C is correct. 28. The counter current multiplier system operate in which structure? ये loop of Henle में involved है. So option C is correct. 29. If a healthy person, the volume of glomerulus filtrate per day is approximately 180 liter होता है. So option D is correct. 30. Which part of the nephron is impermeable to water under the normal condition? Ascending lip of Henle जो होता है. So option C is correct. 31. Tubular secretion of hydrogen ion help in maintenance of the blood pH. Option B is correct. 32. Which of the following is an example of tubular secretion? Excretion in the distal convoluted tubule penicillin की. So given option में option D is correct. 33. In a diabetes mellitus glucose appear in the urine because किस वजह से होता है? Real threshold for glucose reabsorption is exceeded. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डायबिटिक मेलाइटिस का जो पेशेंट होता है उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है. जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो ग्लूकोज जो है बॉडी से निकलता है, इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट.
34 aldosterone primarily promotes sodium reabsorption and potassium secretion में mainly involved है तो option B is correct. 35 the main nitrogenous waste excreted in the human urine is urea होता है option D is correct. 36 who proposed the theory of inheritance of acquired character also known as Lamarckism जीन पेप्टिस्ट डी लामार्क ने प्रपोज किया था ऑप्शन सी इज करेक्ट. 37 which of the following is the best example of Lamarck idea of use and disuse giraffe so option B is correct. 38 Darwin theory of evolution by natural selection was primarily influenced by his observation and उसमें इन्होंने गैलापागोस में टॉर्टोइसेस और पिजन्स को स्टडी किया था ऑप्शन बी इज करेक्ट. 39 which of the following concept was not the part of Darwin original theory traits are inherited as a discrete unit जीन्स का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया था ऑप्शन सी इज करेक्ट. 40 the concept of survival of fittest was conceived by Herbert Spencer ने यह टर्म यूज किया था. 41 which mechanism evolution involve random change in allele frequency especially in small population that's called genetic drift कहा जाता है option C is correct. 42 who published the book on origin of species in 1859 चार्ल्स डार्विन ने पेश की है option B is correct. 43 the idea that earth geological feature formed gradually over long periods uniformity range is influenced Darwin think who is the most associated with this concept Charles Lyell थे so option B is correct. 44 before Darwin which scientist proposed the species change over time but incorrectly suggested that acquired traits are passed to the offspring ये हमारे पास जीन पेप्टिस्ट डी लामार्क का था यूज इन डिसीज थ्योरी थी. So option C is correct. 45 the idea of catastrophism was stated that the sudden short-lived catastrophic event shapes earth geology and explain fossil changes are accompanied by George Cuvier का idea था. option C is correct. 46 the formation of new species due to physical barrier a rare mountain range इसको एलोट्रॉपिक कहते हैं. 3 किस्म की स्पेसिएशन होती है सिंपैट्रिक एलोपैट्रिक पैरापैट्रिक. सो यहाँ पे हमारे पास जो फिजिकल बैरियर चेंज है ये एलोट्रॉपिक में आता है. 47 which of the following is a central idea of Lamarckism used in disuse theory so option B is correct. 48 Lamarck is best known for explaining evolution using the example of giraffe long neck use किया था option C is correct. 49 according to Lamarckism why did giraffe develop long neck so due to continuous stretching to reach higher leaves which are inherited option B is correct. 50 the idea that traits acquired during an organism lifetime can be passed to offspring is called inheritance of acquired character कहते हैं इसको option A is correct. 51 which of the following is the central idea of Darwin theory of evolution natural selection so option C is correct. 52 Darwin book in which he first presented his theory of natural selection was titled origin of species कहते हैं इसको इसकी पब्लिकेशन है ऑप्शन ए इज करेक्ट. 53 which observation did Darwin make during his voyage on MHF Beagle that greatly influenced his theory so Galapagos Island पे हुआ था ऑप्शन बी इज करेक्ट. 54 accordingly to Darwinism evolution occurred due to differential survival and the production of the variants so option C is correct. 55 which of the following is not a key postulates of Darwin theory so acquired character during a lifetime are passed to the offspring ये चूंकि जीन पेप्टिस्ट डी लामार्क का कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है कि और प्रोडक्शन होती है फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है वेरिएशन है ये चीजें थी. 56 the term natural selection was coined by the Charles Darwin option is correct. 57 Darwin traveled on his ship HMS Beagle hermigist ship option B is correct. 58 Darwin studied unusual animal and bird in which island Galapagos Island option C is correct. 59 which bird did Darwin study on the Galapagos Island finch को study किया था option C is correct. 60 accordingly to Darwin's evolution happens due to natural selection की वजह से होता है option A is correct. 61 what does natural selection mean nature select the fittest survival to survive
Option B is correct. 62. The phrase survival of the fittest means best adapted animals survive longer. Option B is correct. 63. What is the name of Darwin's most famous book, Origin of Species? Option B is correct. 64. Which scientist also proposed natural selection along with Darwinism? Alfred Russel Wallace. Option A is correct. 65. Darwinism explains how species change over time. So option B is correct. 66. What is the primary purpose of recombinant DNA technology in health care? To produce human protein like insulin in microorganism. क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का काम ये है कि किसी न किसी तरीके कार से ह्यूमन हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव किया जाए. 67. The first recombinant protein approved for the human use was human insulin था, जिसमें हार्वर्ड बॉयर ने इंसुलिन जीन को इंसर्ट किया था बैक्टीरिया ई कोलाई में और जिससे ह्यूमुलिन की प्रोडक्शन शुरू हुई थी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 68. व्हाट डज पीसीआर स्टैंड फॉर इन इट्स मेन यूज इन हेल्थ केयर? पीसीआर मीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू एम्प्लीफाई डीएनए फॉर डायग्नोस. So option B is correct. 69. Which technology is used to produce a genetically identical copy of an organism? Cloning इसको कहते हैं. So option B is correct. 70. Stem cells are valuable in healthcare because they are differentiate into various cell type for tissue repair के लिए होते हैं. So option B is correct. 671. What is a vector in genetic engineering? A DNA molecule used to carry foreign genetic material into a cell. असल में वेक्टर क्या चीज है? आपके पास 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स है. एक है बैक्टीरियोफेज क्लोनिंग वेक्टर, एक है कॉस्मिक क्लोनिंग वेक्टर, एक है प्लाज्मिड वेक्टर, एक है शटल वेक्टर. सो ये डिफरेंट वेक्टर्स है. इसको यूज किया जाता है कि जो डिजायर्ड जीन होता है इसको टारगेट तक पहुंचाने के लिए. और वेक्टर हमारे पास कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, कुछ एक्सप्रेशन वेक्टर हैं और कुछ कैरियर वेक्टर्स होते हैं. Which 77 which enzyme is commonly used to cut DNA at specific sequence in genetic engineering? इसको restriction endonuclease कहते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे अटैक करके कट लगाते हैं. 73. A major ethical concern regarding embryonic stem cell is they require destructions of the human embryo. So option B is correct. 74. What is the role of a viral vector in gene therapy? Option B, to deliver a therapeutic gene into the target cells. ऑप्शन इसकी जगह आजकल जीन गन इस्तेमाल होता है. 75. Which hormone is now produced by bacteria using biotechnology? इंसुलिन को तैयार किया जाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 77. PCR is used to make mini copies of DNA. So option A is correct. 77. What does a vaccine do? Prepare the immune system to fight a disease. So option B is correct. 78. Monoclonal antibody are used to treat cancer. So option B is correct. 79. What is a common vector in genetic engineering? Mostly plasmid को यूज किया जाता है. So option B is correct. 80. Which of these is of biopharmaceutical? Insulin made by bacteria. So option B is correct. Last MCQ is stem cells are become different type of cell. ये एक ऐसे cells होते हैं जो कि किसी भी organ में जाके उसी का function perform करना शुरू कर देते हैं. Wish you best of luck. See you next time. Allah Hafiz.